So students, in this video, we will be learning about the input and outputs in the Python. So with this video, we will start with the input methods and what are the various methods to take the input from the keyboards. So let me start. तो हम किस तरीके से पाइथन में यूजर से इनपुट लेते हैं और जो इनपुट लेने का तरीका है वो हम कंसोल से ही इनपुट लेंगे, इसलिए हम उसको कंसोल इनपुट बोल रहे हैं। तो यूजर किस तरीके से इनपुट देता है पाइथन में, उसका उसके लिए हम जो फंक्शन या मेथड यूज करते हैं, दैट मेथड इज नोन एज द इनपुट मेथड, है ना। सो लेट मी टेक दिस एग्जांपल, x इज इक्वल टू इनपुट। तो व्हेन यू राइट द x इज इक्वल टू इनपुट और आप लिखते हैं वहां पर प्लीज एंटर द डेटा, इसका मतलब क्या है कि जब हम इनपुट मेथड को कॉल करते हैं तो जो इनपुट मेथड के अंदर जो हमने डेटा पास किया हुआ है दैट विल बी डिस्प्लेड टू द यूजर। और हम सपोज इस इनपुट को लेके प्रिंट करते हैं। तो जब मैं इस कोड को रन करता हूं तो आप सभी लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर कि प्लीज एंटर द डेटा एज रिटर्न देयर, जो आपके सीएमडी पर शो हो रहा है जब भी आप यूजर से इनपुट लेंगे। और सपोज मैंने यहाँ पर पास करा राहुल, एंड आई हिट द एंटर, यू कैन सी प्रिंट x इज इक्वल टू राहुल। एक इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने की है जब हम इनपुट लेते हैं कि यदि मैं इस इनपुट के टाइप को प्रिंट करता हूं, व्हेन आई प्रिंट द टाइप ऑफ दिस इनपुट that is x, when I run this code again, suppose I am passing Rahul, so you can see this is taking the class as a str string. It means जब भी हम बाय डिफॉल्ट इनपुट को पास करते हैं और जब भी हम इनपुट को पास कर रहे होते हैं तो पाइथन वर्चुअल मशीन जो बाय डिफॉल्ट है वो इसको स्ट्रिंग टाइप में लेती है ना। अभी मैंने एक स्ट्रिंग का लिया था इसलिए आपको स्ट्रिंग दिखाई दे रहा है, बट लेट आई टेक द एग्जांपल ऑफ इंटीजर हियर। व्हेन आई पास द 10 बट यू कैन सी द क्लास इज अगेन द स्ट्रिंग। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब जब भी मैं यूजर के थ्रू इनपुट देता हूं इनपुट मेथड का यूज करके, तो पाइथन वर्चुअल मशीन बाय डिफॉल्ट उस डेटा को स्ट्रिंग डेटा मानकर चलती है। ये क्लियरली हमें इंडिकेट कर रहा है कि यदि हमें इस डेटा को डिफरेंट टाइप के डेटा में यूज करना है तो हमें इसको टाइपकास्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है ना, इसको हम समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं एक प्रोग्राम बनाता हूं कि मैं यूजर से दो इनपुट्स लेता हूं और उन इनपुट को हम सम कराते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, वी टेक टू इनपुट्स एंड वी टेक द सम ऑफ द डेटा, है ना, इनपुट डेटा जो हमें मिला है। तो हम क्या लिखेंगे? सपोज मैंने लिखा x इज इक्वल टू इनपुट, एंटर फर्स्ट डेटा, then we will have y is equal to input, enter second data. When I will do the print of x plus y, so now see this. When I pass 10, when I pass 20, so the output is 1020. But for our program, we were expecting the output as a 30 because क्योंकि हम जो दो नंबर्स इनपुट ले रहे थे हम उनको ऐड कराना चाह रहे थे। लेकिन मैंने आपको बताया कि बाय डिफॉल्ट जो पाइथन वर्चुअल मशीन है वो इनपुट मेथड के थ्रू जो डेटा लेती है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में लेती है। और मैंने x प्लस वाई दिया तो इस पर आपको एरर नहीं आई, क्योंकि ये प्लस ऑपरेटर जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम स्ट्रिंग के साथ अप्लाई करते हैं तो वो कॉन्केटनेट कर देता है। दैट इज व्हाट द रीजन कि वी आर हैविंग द 1020। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इफ वी आर टेकिंग द डेटा ऑफ आर टाइप, यदि हमें इसको अपने टाइप के डेटा में कन्वर्ट करना है तो हमें टाइप कन्वर्जन का यूज करना पड़ेगा जो हम प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। सो फॉर एग्जांपल, इफ आई एम पासिंग इंट इनपुट हियर, now the data has been converted into the integer. So when I run this code again, suppose 10 and 20, so you can see the output is 30. So what does it mean? The important point is here, when you pass the input by using the console and by using the input method of the Python, the by default the nature of your data type is string. So as per your requirement, you have to do the type conversion. Let me see one another important concept
regarding the inputs. Suppose uh, want to read multiple values one time. What does it mean? अ, सभी लोगों ने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में कई बार देखा होगा कि जो आपको इनपुट मिलता है, फॉर एग्जांपल सपोज यू हैव गिवन द इनपुट इन योर टेस्ट केसेस like 1 comma 2 comma 3 comma 4. What does it mean? You have given the values as a comma separated values. Similarly, sometimes you are having the values like input in your test case 1 space 3 space 4 space 5. Similarly, you can have input of type has 2 has 3 and so on. So what I should use, you can see you are having the multiple values at one time and you are having a symbol in between that. So that can be the comma, that can be the space, or that can be the hash also. तो जब हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, कंसोल इनपुट लेते हैं, तो हम किस तरीके से इस टाइप के इनपुट को डील करते हैं? क्यों? क्योंकि यदि फॉर एग्ज़ाम्पल इस प्रोग्राम में बोला जाता है कि मैंने आपको इनपुट दिया हुआ है जो कि कॉमा सेपरेटेड इनपुट है एंड दैट इज़ कंटेनिंग द इंटीजर्स व्हिच इज़ कॉमा सेपरेटेड। आपको इसके सारे नंबर्स का सम प्रिंट करना है ना? बट बाय डिफ़ॉल्ट यू आर हैविंग द नेचर एज़ अ स्ट्रिंग। So let me try to solve this problem by the simple method that we have learned till now. So let me take input from the user. X is equal to input. Here the comma separated values. है ना? And we are trying to have multiple values. When you print X, try to write this 1, 2, comma 3, comma 4. When you hit the enter, you can see the X is as a string. So there is no problem. So let I take the type of this also. So you can see is the class string. No problem at all. But my objective is different. I want the individual value here. I want to access the individual value and want to print the sum of these values. So what I need to do, यदि ये स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग की एक-एक वैल्यू को हमें एक्सेस करना है, तो या तो हम लूप कंस्ट्रक्ट का यूज़ कर सकते हैं या फिर हम स्ट्रिंग की एक स्पेशल मेथड है जो हमने डिस्कस की हुई थी स्ट्रिंग के टाइम पर, दैट मेथड इज़ द स्प्लिट मेथड। ठीक है? तो इस स्प्लिट मेथड का यूज करके एंड वन मोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज हियर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। These are two concepts, the split method and the list comprehension. By this, we can directly take the input of multiple values in R format. How we do this? So let we try to do this. हम क्या करते हैं? हम यही कोड लेते हैं, इससे और क्लियर होगा आपको। हमने x is equal to input लिया और x की वैल्यू we can see this the actually string type. So what I will do, I will take one list here and I will write the x dot split. So when I will call the split function and I want the comma separated multiple values here, तो मुझे split function में पास करना पड़ेगा कि मैं किस टाइप के सेपरेशन का यूज कर रहा हूँ। यदि मैं कॉमा का यूज कर रहा हूँ तो मुझे कॉमा पास करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट जो है वो स्पेस होता है और यदि मैं हैश का यूज कर रहा हूँ तो वी हैव टू पास द हैश। सो यू कैन सी दिस व्हेन आई प्रिंट द LST and let I comment it. When I run this code, I pass 1, 2, comma 3, comma 4, comma 5. When I hit the enter, can you see this? This split method has splitted all the string data by using the comma and it is returning the list of all the possible values that is entered by the comma separation.
तो हम कॉमा सेपरेटेड जितनी भी वैल्यूज़ थी, वो सारी की सारी वैल्यूज़ इसने लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न कर दी। मतलब स्प्लिट स्प्लिट फंक्शन जो है वो क्या कर रहा है, इस एंटर्ड स्ट्रिंग पर जब हम स्प्लिट फंक्शन को लगा रहे हैं, तो वो लिस्ट के फॉर्म में सारे के सारे डेटा को दे रहा है। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है ना, वी वांट टू परफॉर्म द समेशन ऑफ दिस डेटा एंड दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ द इंटीजर। सो फॉर एग्जांपल व्हेन आई प्रिंट द type of individual data, type of I, or when I run this code and pass these values. So can you see this again? This is a string, string, string. So before its use, we have to convert this string data into the integer type. So instead of doing all these things, we are having one special way to take this input, that is our multiple values from the keyboard in a single line. So how we will do this? Suppose x is equal to, I'm writing and I'm just taking the same code here. मैंने इनपुट लिया यूजर से और हमको पता है कि ये जो इनपुट जब हम यूजर से लेते हैं, this is basically just a minute, when we take this input from the user, this is basically a type of string. So when you apply the split method over this, that will return you the particular symbol separated values but in the form of the string only, because वो जो डेटा कंटेन किया था वो स्ट्रिंग के फॉर्म में था। तो सपोज अभी हम जो डेटा ले रहे हैं वो कॉमा सेपरेटेड ले रहे हैं, है ना। बट what we are doing the list comprehension to get the multiple values in a required format. तो मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा for individual value, for individual I in, it means जो इस इनपुट फंक्शन पर, इस इनपुट फंक्शन के डेटा पर स्प्लिट अप्लाई करने पर जो हमें लिस्ट रिटर्न हुई है, उस लिस्ट की इंडिविजुअल वैल्यू को हम क्या करते हैं, वी कन्वर्ट इट इनटू द फॉर्मेट दैट इज रिक्वायर्ड। सपोज वी आर पासिंग इंट ऑफ आई। तो हमने क्या करा, ये जो लिस्ट रिटर्न हो रही थी उस सिंगल लाइन में ही उस लिस्ट की इंडिविजुअल वैल्यू को हमने रीड करा और उसको, उस डेटा को हमने कन्वर्ट करा जिसमें हमारे रिक्वायर्ड फॉर्मेट में, दैट इज इंटीजर में, और फाइनली हमने इसको एक्स में स्टोर कर दिया। ओके, सो लेट आई टेक द सेम कोड हियर। सपोज आई एम टेकिंग दिस वन and now we check the type of this x individual value. When I run this code, hit enter. So can you see this? So the multiple values we have taken in a single line, that is comma separated, and when we check the type for this, it has been converted into the integer. It means that by using the list comprehension, we can take a multiple values at a time and by converting it into the exact format that we require. तो अब यदि मुझे इसका सम करना है, इन सारी वैल्यूज का सम निकालना था जो प्रोग्राम हमने इंटेंडेड लिया हुआ था, सपोज आई एम टेकिंग द सम इज इक्वल टू 0 here, and just what I need to do, I will take the individual value here. Finally, what I need to do, just I will print the sum here. So when I run this code again, hit the enter, so you can see the output is 10. So this is what the way to take the multiple values in a required format. तो हमने क्या देखा अभी तक, हमने देखा कि हम किस तरीके से एक सिंगल वैल्यू को, कंसोल वैल्यू को आप इनपुट ले सकते हैं यूजर से। सिमिलरली हम किस तरीके से मल्टीपल वैल्यूज को एज अ इनपुट ले सकते हैं। सपोज यदि हम यहाँ पर देखिए स्प्लिट के प्लेस पर, स्प्लिट में जो हमने कॉमा पास किया हुआ है वो हम केवल इस तरीके से करते हैं और इसमें हम जो वैल्यूज पास करते हैं, तो हमने स्पेस सेपरेटेड वैल्यूज पास करी हैं जो कि बाय डिफॉल्ट नेचर में है उसके, और स्प्लिट फंक्शन जो बाय डिफॉल्ट सिंबल लेता है वो स्पेस लेता है। सो यू आर हैविंग द आउटपुट एज अ 10 अगेन, है ना। अब इसके अलावा मैंने देखा था आपके पास एक टेस्ट केस जो लिया था हमने, वो हमारा था हैश सेपरेटेड, है ना। सो लेट वी ट्राई टू हैव अनदर सिंबल दैट इज हैश सेपरेटेड हियर, है ना। तो अब मैं जो आउटपुट जो इनपुट ले रहा हूँ वो हमारा होगा हैश सेपरेटेड, सपोज टू हैश 3 हैश 4। So when I hit enter, just a minute, base 10 has 10. Uh, okay, yeah, yeah.
1 has 2 has 3, आउटपुट इज 6 एक्चुअली। जब हमने इस लूप को रन करा जिसका हमने इनपुट को रन करा था लास्ट टाइम तो वहां पर 1 2 और हैश 3 के अलावा एक स्पेस आ गया था। दैट इज द रीजन कि प्रीवियस जो हमारे पास एरर आई थी वो इनवैलिड लिटरल बोल रही थी वहां पर, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसको हैश ही मिलना चाहिए सेपरेशन में, है ना। सो नाउ 1 हैश 2 हैश 3। तो अब जब भी कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में आपको किसी भी टाइप का इनपुट किसी सिंबल से सेपरेटेड कोई भी वैल्यू दी जाएगी, सो दिस व्हाट द वे बाय व्हिच यू कैन सेपरेट आउट द इंडिविजुअल वैल्यू एंड यू कैन यूज इन योर प्रोग्राम, है ना। अब एक और चीज है इसमें कि वी वांट टू परफॉर्म द इवैल्यूएशन ऑफ द एक्सप्रेशन। मतलब यदि मुझे इनपुट के फॉर्म में सपोज आई हैव गिवन इनपुट एक्सप्रेशन, I want the solution of that expression. What does it mean? Suppose I'm passing a data uh, 10 into 20 plus 30. So I should have some written value after evaluating this expression. तो Python ने आपको जो एक प्रोविजन दिया हुआ है कि भाई मैं यदि x is equal to eval फंक्शन का यूज करता हूँ, the function is eval, and when I pass a string in it in the form of a string whatever the expression we want to provide, so suppose 10 into 20 plus 30, whatever the example we have already taken. So when I run this code and print the x, you can see the output is 230. It means that you can not only take the single input, you can take the multiple input, as well as you can take directly expression that will be evaluated and you will have the output. So these are the three ways by which you can take input in a Python. One more important point, suppose somebody is giving the input and we want the exact format of the data type as a Python object. व्हाट डज इट मीन एग्जैक्टली कि भाई मान लीजिए किसी ने आपको इनपुट में लिस्ट दी हुई है, किसी ने आपको इनपुट में डिक्शनरी दी हुई है, किसी ने आपको इनपुट में यदि आपको फ्लोट दिया हुआ है वो जो कि आपका कॉमा सेपरेटेड है। तो जब ये इंडिविजुअल वैल्यू को मैं हैंडल करूं तो उसका फॉर्मेट सेम होना चाहिए जो कि पाइथन ऑब्जेक्ट की तरह होता है ना। देखते हैं, लेट मी टेक दिस एग्जांपल। सपोज मैं लेता हूं x इज इक्वल टू, वी आर यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट ऑफ द list comprehension to take the multiple values. Suppose I am taking one eval p, and for every p in our input, okay, और यहाँ पर हम डिस्प्ले करते हैं यूजर को एंटर द डेटा। क्या करा, इंडिविजुअल वैल्यू जो थी हमारी इनपुट में जो भी आई थी उसको हम इवेल के थ्रू ही कन्वर्ट कर रहे हैं, टाइपकास्ट कर रहे हैं। तो ये जो फंक्शन है हमारा, ये हेल्प करेगा हमें एज इट इज आउटपुट को लेने के लिए जो हमें इनपुट के थ्रू इंडिविजुअल वैल्यू पर मिलेगा, है ना। व्हाट डज इट मीन? अब देखिए, फॉर एग्जांपल मैं एक लूप रन करता हूं फॉर आई इन एक्स प्रिंट टाइप ऑफ आई। वी आर रनिंग दिस कोड, नाउ आई पास वन, एंड मैं स्प्लिट में देखिए मैंने स्प्लिट में कुछ भी सिंबल पास नहीं किया है, इसका मतलब मैं स्पेस सेपरेटेड वैल्यूज ले रहा हूँ। हियर आई एम पासिंग टू, again space I am passing a dictionary one colon Rahul. When I run this code, so you can see here this is your code. Suppose I am passing one space two, I'm passing dictionary, that is one colon Rahul, that is space, suppose list one two three. I hit enter here, so you can see this, the individual data type that has been passed as a input data. Suppose तो मैंने initially one pass करा था, that was integer, then second मैंने space separated जो pass करा था वो integer था, third हमने जो pass करी थी it was a dictionary, so you can see the type of dictionary, and finally you can see the type of list here.
We have discussed the four ways here by which simple input method you can pass a single data that will be treated as a string in the by default nature. So you have to convert as per the requirement like integer, float, and so on, so on. Similarly, if you want to use the individual value and if you want to perform the expression and you want to use the individual value as per the data types of the Python, you will be using the eval function. So that is what the way to handle the multiple inputs from the console in a single line. And previous one was the taking the single input from the console. So that is these concepts are very much helpful for the competitive programming. If you want to use, you will be finding the various test cases where you will be finding the data input, the separation by the particular symbol. So for this video, it's over from my side. Thank you.